हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आज यहाँ पे हम लोग का ट्यूसडे है और ये व्लॉग है मंडे का शूट किया हुआ। सुबह की पूजा वगैरह हो गई। मैंने दिया का कोई वीडियो नहीं लिया उसका, क्योंकि हर बार क्या भगवान की पूजा तो हम करते ही हैं। सुबह की चाय बन रही है यहाँ, मेरी सेपरेट बनती है। मुझे कम दूध वाला चाहिए एंड इन दोनों को थोड़ा सा दूध ज़्यादा। मौसमी हालांकि मेरे जैसे ही पी लेती है, लेकिन उसको डैडी को स्पेशली कम पानी और बहुत दूध और बहुत शक्कर वाली चाहिए। इस हिसाब से दो चाय अलग बनती है। यहाँ पे डेली रूटीन के साथ मैं आप लोगों के साथ आज कुछ शेयर करूँगी। डेली रूटीन में आज लंच में बन रहा है गोभी की सब्जी, तुअर की दाल और राइस, ये बन रहा है। इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे। चलिए। Today's video is all about the turmeric haldi, all about the benefits and side effect. Benefits are, we all know about the benefits of the turmeric, but there are, everything has a plus and minus side also. So no problem to taking in a like a small portion, like a 1/4 teaspoon is enough. That's more than enough. If you are eating a 3 times Indian food, because Indian food, we all using a haldi. Every meal we use the haldi, right? So that should be enough for our diet in a healthy. But in my case, sometime I'm eating like whenever I eating sandwich, nacho, that we don't put a haldi in that kind of recipe. So that day sometimes I'm taking extra haldi in a night time. Otherwise I don't, because that should be enough whole day my routine, and especially I'm just eating one time a day. So my case, if I'm taking a haldi at night time 2 or 3 times a week, that has no problem with me. But if you guys are eating 3 times a meal, Indian meal, then you should have a careful about the haldi. As here I'm showing you on my hand, very small cut. If you see it, I don't know, yeah, now you can see it. There is a 3 small cut. If you can see, very thin white line. Yeah, there you go, it's focusing now. यहाँ पर मैं मेडिसिन ले रही हूँ। बस मेरे हाथ में मेडिसिन है, दूध के साथ लूँगी। वही मैं बता रही हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट अबाउट दैट थिन लाइन्स कट. I have been experience of turmeric when my kidney was failed and about to go to the on dialysis on hemo. So before they put the catheters, they checking like I mean, I don't know you guys are know or don't know, but that time I don't have any knowledge what they are doing. Whatever doctor doing, I'm completely okay with that, because we don't have a sources much to find out anything. Anyway, so they put the catheters on my neck, and before that they did really small cut, as I show you here on my hand. They did 3 cuts one by one, and whenever they did cut on my hand, the blood was not stopped. So blood was constantly running out on my hand, and doctor asked me, do you take any blood thinner medicine? I said no, I'm just taking what that Tylenol, because I was having a really bad headache, so like 2 or 3 times a week or maybe more than that. So there are a team of the doctor, like 10 or 12 doctors over there in my room, and one dietitian also over there. So dietitian was asking me my whole day eating plan routine, and that time I was taking a turmeric, and I told her the whole day my diet, and told her about my turmeric also. I'm taking a night time at the turmeric as my blood प्योरीफाई, बिकॉज वी ऑल नो दैट टाइम्स कि आपका ब्लड क्लीन करता है, ये करता है, वो करता है। इससे आगे तो कोई नॉलेज थी नहीं, बस ले लेती थी वो टर्मरिक. Yes, so dietitian told me, yeah, that this is it. Turmeric has a lots of benefits, but they having turmeric having a blood thinner properties also. So my point is, if you are going for any kind of surgery or any kind small or big, especially whomever on the dialysis, because dialysis person has a lots of cuts on our body that during that dialysis, because even though if you have already transplant, so be careful about the haldi, be careful about the turmeric, because of as I told you, there has a blood thinner properties. And whenever we having a surgery, any kind of surgery, even though small or big,
doctor has to be a wait until you get the normalized. So my case was same thing. I have hospitalized about 1 week to get everything normal, and then they did the dialysis, that hemodialysis catheters on my neck. And it also boosts our immunity also, and we all know the kidney transplant patient, there is a certain limit to boost our immunity, because we're taking all that immune suppressive medicines. So be careful about it. All our Ayurvedic remedies are really good benefits, but it has to be a certain time to take it, or limited time to take it. I would say not a certain time, but limited time to take it. So yeah, this is all about it. So I hopefully this is my first video in English, and whomever needs this video in English, that might be help to them. एनीवे बैक टू नॉर्मल। पता है क्या, आज मैंने नोटिस किया, मैंने 3 साल में पहली बार इतनी इंग्लिश बोली है। घर पे तो इंग्लिश बोलते नहीं हैं, इतने सालों से काम होता था ना, तो एक स्पीकिंग जो हैबिट थी ना, इतनी अच्छी हो गई थी इंग्लिश। और अब मुझे लग रहा है कि मेरी इंग्लिश यार बहुत वीक हो रही है, मैं अटक अटक के बोल रही हूँ। तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस ही छूट गई ना, घर पे रह के बस मैं गुजराती में बात करती रहती हूँ बेटी के साथ, थोड़ी बहुत इंग्लिश वर्डिंग आ गई, दैट्स इट। सच में यार, इसका तो कुछ करना पड़ेगा अब। मेरा यहाँ पे लंच हो गया, सब कुछ हो गया है, और बाहर बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, तो थोड़ा बहुत मैंने वो व्यू ले लिया आपके लिए। सो यहाँ सारा किचन मेरा डन है अभी। एंड आपको इस तरह की वीडियो इंग्लिश में चाहिए, इससे भी आने, आज मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो डाली है, जिससे मीन्स इतनी शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन मैं थिंक कर रही हूँ कि इससे भी शॉर्ट कर दूँ, लाइक जस्ट इंफॉर्मेशन दे दूं आपको किडनी रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो देखती हूँ अगर आपका किस तरह का इस वीडियो के बाद रिव्यू आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आगे करूँगी। यहाँ पे मैंने सिंगदाना आपने देखा थोड़ा सा भून लिया है माइक्रोवेव में, इन दोनों को खाना है शाम के टाइम पे। और एक क्या बोलते हैं, मावा की बर्फ़ी बना ली थी, थोड़ी सी आपने देखी है, भगवान जी को आज चढ़ाने के लिए। और जैसे मैं कहती हूँ, भगवान को मैं बहुत ही कम चढ़ाती हूँ, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं और मैं वेस्टेज कुछ भी नहीं करना चाहती। स्पेशली प्रसाद तो हम किसी को यहाँ दे भी नहीं सकते, और हम अकेले ही खाते हैं, तो इतना सारा खाया नहीं जाता। साइड में मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ, लेकिन भगवान को मैं इतना ही चढ़ाती हूँ जिसे हम पूरा कर सकें। सो यहाँ की शाम की दिया बत्ती भी हो गई। ये भी मैं नहीं दिखाने वाली थी आप लोगों को, लेकिन ये दिखा रही कि मैं यहाँ पे कपूर और लौंग यहाँ पे, जैसे आपको मैंने कहा था, 1 वीक मैं करती हूँ। सो कभी कभार इस तरह के दिया भी करती हूँ ना शाम को, तो शाम को या सुबह जब भी, तो हफ्ते में एक बार इस तरह से भी मैं इसमें लगा देती हूँ। सो हाँ, बस इस वीडियो का यही मैं एंड करूँगी। आई होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सो बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।